welcome. You're watching Morning Markets on Money9, India's first multilingual platform for personal finance from TV9 News Network. I'm Sakshi Batra, and on this show, we give you all the key updates you need to begin your trading day right. तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस ट्रेडिंग सत्र का। खास तौर पर देखेंगे कि क्या कुछ संकेत आज भारतीय मार्केट्स के लिए देखने को मिल रहे हैं। कल का सेशन एक वीक सेशन था। कल हमने देखा था कि मार्केट्स में एक वीकनेस के साथ ही ट्रेड हुआ, वॉलेटाइल ट्रेड था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो लाल निशान में हुई है। भले ही आप बेंचमार्क इंडिसेस की बात करें या फिर आप ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें, आप देखेंगे कि 1.25% तक की वीकनेस हमें सेंसेक्स और निफ्टी में देखने को मिली है। 50,000 के नीचे सेंसेक्स बंद होता हुआ 49,801 के लेवल्स पर दिखा। वहीं निफ्टी 50 की बात करेंगे तो यहां पर भी 15,000 के नीचे ही ट्रेड हुआ भी और 14,721 के लेवल पर। और अगर आप देखेंगे करीब करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ यहां पर निफ्टी 50 बंद होता हुआ नजर आया। अगर आप देखेंगे इससे ज्यादा भी वीकनेस हमें निफ्टी बैंक में दिखी। कल ओवरऑल ट्रेड में सबसे ज्यादा प्रेशर बैंकिंग, फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स में देखने को मिला था और इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी बैंक में करीब करीब 575 पॉइंट्स की जो गिरावट है वो कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली और जो क्लोजिंग लेवल था 34,229 का था। ब्रॉडर मार्केट्स में हालांकि ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। 2.25% तक के हिसाब से गिरावट यहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों ही इंडाइसेस में देखने को मिली। पिछले कई सेशंस में हम देख रहे थे कि मार्केट्स में अगर आप टुवर्ड्स द क्लोज वीकनेस भी देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट्स फिर भी थोड़ा संभाल लेते थे और अपने आप को बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आते थे। लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में ये जो ट्रेंड था ये रिवर्स हुआ। ये क्यों हुआ इसको भी समझेंगे आज हम लगातार एक्सपर्ट से बात करते हुए कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में क्या कुछ चिंता है और क्या आगे जाते हुए ट्रैजेक्टरी रह सकती है। मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों में ही अगर आप देखेंगे 450 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं। ग्लोबल संकेत आज काफी अच्छे हैं। अगर आप यूएस मार्केट्स को देखेंगे तो सभी में, चाहे वो डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो या नैस्डैक हो, सभी में आधे प्रतिशत तक का जंप देखने को मिला था। 33,000 का लेवल डाउ जोन्स हमें स्केल करता हुआ नजर आया। S&P 500 अपने रिकॉर्ड हाई लेवल पर है 3974 के लेवल्स पर और नैस्डैक ने भी अपने जो ओवरऑल ओवरनाइट ट्रेड का जो दिन था वो लॉसेस को इरेज करते हुए हरे निशान में बंद होता हुआ कामयाब नजर आया। 13,525 के लेवल पर नैस्डैक भी ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब इसके पीछे की वजह क्या है? कल भी हमने आपको बताया था कि FOMC की बैठक थी और उसी के डिसीजंस का मार्केट्स वेट कर रहे थे कि किस तरीके से यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, यूएस फेडरल रिजर्व, वो क्या दिशा तय करता है इंटरेस्ट रेट्स को लेते हुए और क्या आउटलुक देता है यूएस की इकोनॉमी को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर। और ये तमाम डिसीजंस आपके सामने हैं। सबसे पहला बड़ा फैसला ये था कि कोई रेट एक्शन नहीं हुआ, रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ फेडरल रिजर्व की तरफ से। दूसरा क्या बड़ा सिग्नल मिला? फेड ने ये सिग्नल किया है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 2023 तक नहीं बढ़ते हुए नजर आएंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट्स को एक अच्छी बात लगी है और मार्केट्स ने इसको थम्स अप दिया है। फेड ऑफिशियल्स ने जीडीपी ग्रोथ को भी बढ़ाया है, अपने पुराने आउटलुक से बढ़ाकर 6-6.5% तक के आसपास का कर दिया है, जिसे मार्केट्स ने पसंद किया है। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को लेकर जो चिंताएं थी, क्योंकि लगातार यूएस बॉन्ड यील्ड्स में जो बढ़त है 1.6% तक की जो बढ़त हमें देखने को मिली है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को लेकर चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन यूएस फेडरल रिजर्व की स्टेटमेंट्स में जो आया है वो ये है कि फेडरल रिजर्व के जो ऑफिशियल्स हैं उनका मानना है कि जो भी इन्फ्लेशन में बंप अप आएगा वो एक टेम्पररी फिनोमेना रहेगा, शॉर्ट लिव्ड रहेगा, जिसे मार्केट्स ने एक थम्स अप जरूर दिया है। अब फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पोवेल ने यह कहा है कि फिलहाल के लिए राइजिंग ट्रेजरी यील्ड्स पर रिएक्ट करने का समय नहीं है और नहीं करना चाहिए। एक और पॉजिटिव स्टेटमेंट उनकी तरफ से। और फेड ने यह भी इंडिकेट किया है कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो मैक्रो इंडिकेटर्स उन्हें मिल रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट के हैं, यानी कि इकोनॉमिक आउटलुक उनको अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। एम्प्लॉयमेंट में भी काफी अपटिक्स नजर आए हैं, जो कि एक और बेहतर इंडिकेशन है एम्प्लॉयमेंट का, डिमांड का, इकोनॉमी में सुधार का। तो कोविड-19 पैंडेमिक से बढ़ते हुए अब इकोनॉमी सुधार की तरफ जा रही है, बढ़त की इंडिकेशंस हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे FOMC की डिसीजंस मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव थे और यही मार्केट्स में आज रिफ्लेक्ट हुआ है। एशियन मार्केट्स ने भी अगर आप देखेंगे इन सभी इंडिकेशंस को देखते हुए अच्छी तेजी दिखाई है। यूएस फ्यूचर्स में भी अगर आप देखेंगे अच्छे इंडिकेशंस थे और वही बाकी ग्लोबल मार्केट्स फॉलो कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स अर्ली ट्रेड में 1.5% तक की तेजी के साथ निकले
और हैंग सेंग इस समय बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. Shanghai is also up by about 0.5% in trade right now. So all Asian markets are cheering the FOMC decisions taken overnight. And let's see what kind of indications are we getting then from the Singaporean Nifty index. Again, a 1% uptick is what we can expect at the Indian markets to open at 14,929. That's the level at which the Indian markets or the Indian Nifty index may open in today's trading session with gains of about 157%. So a gap up there is expected. Now, as far as the money market is concerned, again in a range, rupees trading at 72.54 against the US dollar with a flat to a positive bias right now. Moving on to the crude oil markets. Now, here is some red that you have been seeing, although it's positive for the Indian markets. Now, for the fifth consecutive session, we are seeing that the Brent crude prices, the WTI crude prices are benign. They are in for the fifth consecutive session of weakness as US inventories keep on building up, and there is going to be still, somewhere where the demand will actually push up to the previous pre-COVID levels as well. So we are seeing the Brent crude prices at 67.6 to the dollars to the barrel, whereas the WTI crude is also trading at a losses of about 0.5% at $64.24 to the barrel right now. So we'll just have to wait and watch and find out what kind of impact will this have on the Indian fuel prices as well. So far we have been seeing that the petrol and the diesel prices have been steady so far. Now, the stocks to watch today would include from the heavy electrical space BHEL. Remember, it was down about 7% in yesterday's trading session, but there is some positive news that the company has emerged as the lowest bidder for about 10,800 crore rupees of fleet mode tender floated by NPICL. So there may be some kind of uptick that you may see in the stocks today. Now, apart from this, HFCL, that's another stock you need to watch. About 5% was the cut that we saw yesterday. Now, optical fiber cable manufacturer HFCL has bagged an order worth 221 crore rupees from the UP Metro Rail Corporation. Again, a positive news. So you may see some upticks on that stock as well today. Now, Indian metals and ferro alloys, 5% downtick yesterday. The company says that ICRA has upgraded the credit rating on companies' long-term and short-term loan facilities from the banks. Again, a positive news. So you may see some upticks today again on this stock as well. Satin Credit Care Network, again 5% downtick was seen in the overall broad-based selling that we saw yesterday. The companies have said that their promoters have reduced the pledged shares and the percentage from 8.9% to about 3.09%. That's a sharp downtick, and that's a positive for the company. So you may see a reversal of the trend that you were seeing in yesterday's trading session as far as the stock is concerned as well. Now, moving on to the stock recommendations that we are getting for today. Now, Nilesh Shah has given you a first short call for today. RBL Bank, 5% downtick was seen yesterday. The target price that he expects on the stock to go is 211 with a stop loss of 229 on the upside. Moving on to another stock, Tata Steel is where he finds pressure to be building on. Target price that you can keep on the stock would be 680 with a stop loss on the top would be at 722. Another stock from his table would be Chennai Petroleum Corporation. A target price on the buy side is 116 rupees with a stop loss that you can keep on the stock at 108 rupees per share. Yesterday we had seen a 1.5% uptick again. Now, from Nifty Traders Triggers.com, Manish Shah has given a buy rating on Asian Paints. The target price that he has given is 25.75 with a stop loss of 23.90 on this stock for today. Another stock that he bets on the short side is actually Escorts. The tractor major may find its stock prices slipping to 12.80 as per his target price, and the stop loss that he's kept for this stock on the upside would be 13.60. And yesterday again we had seen a 1.5% downtick for this stock as well. Now, HAL is another stock that he wants you to keep a focus on for a buy trade. 1180 is the target price that he's kept at with a stop loss that you can maintain on the stock at 990 rupees. So these are 6 calls with a mix of buy and sell calls that you can choose from for a profitable trade of today. So with that, we wrap this edition of Morning Markets. A whole lot of action on market opening and also beyond. So stay tuned with us on Money9 for this action.